हाय फ्रेंड्स। जैसे अभी न्यूज़ में आ रहा है 2 दिन से कि तालिबान ने जो है कब्ज़ा कर लिया अफ़गानिस्तान पे। तो बहुत से लोगों को पता भी नहीं है, मुझे भी नहीं पता है कि तालिबान एक्चुअली में शुरुआत कहाँ से हुई, उनकी हिस्ट्री क्या है। हम सबको यही पता है जो हम लोगों ने मीडिया से सुना है कि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो कैसे वजूद में आए, उनकी शुरुआत क्या है, हिस्ट्री क्या है। तो आज इसी टॉपिक पे हमारा वीडियो होने वाला है। एक्चुअली बेसिकली 2 वीडियो हैं, एक इंग्लिश है एक हिंदी है। तो पहले हम इंग्लिश वाला देखेंगे, उसके बाद हिंदी वाला देखेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के उनकी हिस्ट्री और उनके बारे में कि एक्चुअल में तालिबान है क्या। शुरू करते हैं। Let's talk about the Taliban. They've been fighting the government and its allies in Afghanistan for 20 years. Today, they seem stronger than ever. The Taliban have adapted their tactics. They've gotten more brutal. And now the Americans are going home. It's time to end the forever war. Biden wants his troops out by September 11th, and that could strengthen the Taliban even more. So who exactly are the Taliban? How is it that they have so much power? And why are people worried they'll take over Afghanistan again? To understand the Taliban, you need to know what happened in Afghanistan in the 1980s. Afghan guerrillas called the Mujahideen fought a Soviet occupation for 9 years. They even got money and weapons from the CIA. In 1989, the Soviets pulled out, and the next few years were pretty chaotic. By 1992, there was a full-blown civil war with tribal leaders fighting for power. 2 years later, a militia called the Taliban started getting attention. Many of its members had studied in conservative religious schools in Afghanistan and across the border in Pakistan, and some of them had also fought as Mujahideen. And they had their own plans for the country. موږ غواړو چې کابل ته ولاړ شو او کابل کې اسلامي حکومت اعلان. The people were so frustrated with this lawlessness, and the Taliban came marching along from Kandahar to city to city to city, saying, "We're gonna make the cities safe for you again." By 1996, the Taliban had seized the capital. They declared Afghanistan an Islamic emirate and started imposing their own strict interpretation of Islamic law. They were like, you can't watch movies, you can't listen to music, women can't go to school, and other than doctors, they can't go to work. You have to wear a certain type of clothes, you have to have a certain kind of beard, it just became more and more restrictive. Then 9/11 happened. The US was after al-Qaeda's leader Osama bin Laden, who was hiding out in Afghanistan with the Taliban's help. The Taliban said they wanted proof he was behind the attack, and when they refused to hand him over immediately, the Americans invaded. The Taliban will pay a price. Within a couple of months, the Taliban were forced out of power, and Afghanistan got a new interim government. 3 years later, it got a new constitution, and Hamid Karzai was elected president. While that was going on, the Taliban had regrouped. They wanted foreigners out, and they wanted back in. What followed were years of devastating conflict, and it's still going on. More than 40,000 Afghan civilians killed, at least 64,000 Afghan military and police, and more than 3,500 international soldiers dead. The US alone has spent almost $1 trillion on the war and reconstruction projects. And after all that, Afghanistan is still deeply unstable, and the Taliban are still a force to reckon with. They're an insurgency fighting international occupation as they see it. They're fighting an illegitimate government in Kabul as they see it. And they're a voice of resistance to, as they see it, return Afghanistan to a more pure Islamic society. Today, the Taliban have as many as 85,000 full-time fighters and training camps across the country, and the area they control has been growing. Right now, the Taliban control 1/5 of Afghan districts. On top of that, half of all districts are considered contested, which means the Taliban have a strong presence in many of those places too. And they control parts of some major highways. Whoever controls the roads in Afghanistan, pretty much controls the country. They've managed to basically give people the sense that, wherever you go,
you'll have to deal with the Taliban. They're also well organized. The Taliban's leader is Hibatullah Akhundzada. He heads a council that oversees about a dozen commissions in charge of things like finance, health, and education. Below them are local officials in charge of everyday services. So in a way, the Taliban have set up a parallel state. They even run their own courts, which can be pretty popular among Afghans. Justice has been a huge gap in Afghanistan, and where the state courts have failed, these Sharia courts are able to come into communities who may even be reticent to support the Taliban, but they offer justice. All that control has also made them rich. According to Taliban members and a UN committee, they make close to $1.5 billion a year. They've always made a lot of money from growing opium poppies and the drug trade, but they found even more ways to generate income. Last year, they made millions from mining and trading minerals and even producing methamphetamine. They also have their own tax collection system and receive funding from abroad, although suspected sources like Pakistan and Iran deny it. Over the years, the international community has tried to get the Taliban and the Afghan government talking, or at least to talk about talking. There was even a meeting in the Maldives at one point. And during a brief Eid ceasefire in 2018, Taliban and Afghan soldiers were seen mingling in Kabul, even praying together. But overall, peace negotiations haven't achieved much. The Ghani government has been incredibly antagonistic and sees the Taliban as a real existential threat to everything that they represent. The Taliban have been quite adamant on their demand that they want the re-establishment of their regime that was toppled by the US intervention. The question now is, what will happen when the roughly 10,000 US and NATO soldiers leave? Will the Afghan government be able to survive? नहीं भाई, And what will occupied the कर लिया Taliban उन्होंने, do? छोड़ते ही. Well, the prospects for peace and stability aren't looking great. Even while peace talks have been going on, almost 1,800 Afghan civilians have been killed or injured in the first 3 months of this year. That's almost 30% more than last year. There's also been a wave of assassinations that people blame on the Taliban. Targeted killings continue. Civilian government workers, employees, but also activists and journalists. It's to make people feel less and less safe, less and less secure, to sort of send back the message repeatedly that your government is not protecting you. Afghans are already asking themselves what life might be like if the Taliban take over again. Will they rip up the constitution, which protects basic human rights? Will women be able to travel without a male guardian? Will women be able to be judges? Will a woman be able to run for president? There's a lot that is ambiguous and unknown. In a New York Times op-ed, the Taliban tried to clear things up, saying they want to build an Islamic system where the rights of women that are granted by Islam, from the right to education to the right to work, are protected. And right now, there are some places under Taliban control where girls are in school, but not everywhere. It's really localized. I mean, in some areas, we know that the local commanders are a bit more flexible when it comes to women's education. In some areas, they are not at all. So how much support is there for the Taliban? Well, according to a major public opinion study done in 2019, 85% of people said they had no sympathy for them. I've traveled to a large proportion of this country. The vast majority of people I speak to don't have a favorable view of the Taliban. و اما اون طالبه که در ذهن من کابوس بد و خوابهای شیرین کودکانه مرا به یک خاطرات تلخ مبدل ساخته هرگز نمیپذیرم. People may not like them, but the Taliban know what they want, and they've shown that they're in it for the long haul. So far, their strategy seems to have worked. Al Jazeera is always monitoring the situation in Afghanistan and the negotiations here in Doha. So check out our website for the latest and YouTube for reports from our correspondents on the ground. I'll see you next week. फर्स्ट वीडियो में इतना तो क्लियर हो गया कि तालिबान को जो है अमेरिका ने क्रिएट किया, जिस ग्रुप से वो निकला उसको सारी फंडिंग सब कुछ अमेरिका ने ही दिया था, क्योंकि वो लोग सोवियत यूनियन से लड़ रहे थे। 9 साल तक उनकी जंग चली, तो सारी फंडिंग और ट्रेनिंग जो है सब अमेरिका ने प्रोवाइड करी, क्योंकि ये तो वेल नोन फैक्ट है कि अमेरिका और रशिया की बनती नहीं है।
तो रशिया को वहाँ से निकालने के लिए उन्होंने तालिबान मुजाहिदीन का एक ग्रुप क्रिएट किया जहाँ से तालिबान निकला। तो ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। शुरू करते हैं। हम खुदा में उनके गहरे विश्वास के बारे में जानते हैं। हमें विश्वास है कि उनके संघर्ष को सफलता मिलेगी। उस तरफ वो ज़मीन तुम्हारी है, एक दिन वो तुम्हें वापस मिलेगी। तुम्हारी जीत होगी। तुम्हारे घर, तुम्हारी मस्जिदें तुम्हें फिर से वापस मिलेंगी, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई सच्ची है और खुदा तुम्हारी तरफ है। ये बात 1979 में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ज़बिग्नीव ब्रेजेजिंस्की ने अफगानिस्तान के मुजाहिदीन से कही थी। उन मुजाहिदीन से जो सोवियत संघ की देखरेख में अफगानिस्तान में चल रही वामपंथी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। ब्रेजेजिंस्की ने अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के पास स्थित खैबर पख्तूनख्वा इलाके का दौरा किया था और वहीं पर अफगानिस्तान से भाग आए मुजाहिदीन को संबोधित किया। बाद में अमेरिका ने पाकिस्तान और सऊदी अरब की मदद से इन मुजाहिदीन को हथियार और फंड दिए और सोवियत संघ के खिलाफ जिहाद छेड़ने के लिए कहा। इन मुजाहिदीन ने सोवियत संघ को हरा दिया। आगे चलकर इनके ही बीच अफगानिस्तान की सत्ता के लिए गृह युद्ध हुआ। इन्हीं मुजाहिदीन के बीच से निकला तालिबान। उसने साल 1996 में अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया, लेकिन 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने तालिबान को खदेड़ दिया। हालांकि तालिबान ने किसी तरह अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी बनाए रखी। लंबे वक्त में अफगानिस्तान में रहने के बाद जब अमेरिकी सैनिक लौट गए तो तालिबान ने वहां कब्जे की लड़ाई फिर शुरू कर दी। अब उसने एक बार फिर वहां कब्जा कर लिया है। उसके आतंक के चलते लाखों लोग अफगानिस्तान छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तालिबान के आतंक की निंदा दुनिया का हर तार्किक व्यक्ति कर रहा है। अमेरिका में विपक्षी सांसद राष्ट्रपति जो बाइडेन के सैनिकों को वापस बुलाने के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। इन सांसदों की चिंता है कि तालिबान फिर से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देगा। इस बीच तालिबान को पालने पोसने में अमेरिका की भूमिका की भी चर्चा हो रही है। मसलन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की मुजाहिदीन के साथ एक फोटो फिर से सोशल मीडिया पर तैरने लगी है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अपने फायदे के लिए जिन लोगों को बंदूक और कट्टर इस्लामिक विचारधारा की खुराक दी, वो अब न केवल अफगानिस्तान के लोगों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गए हैं। 1919 में अंग्रेजों को हराने के बाद अफगानिस्तान पूरी तरह से आज़ाद हो गया था। हालांकि वहां बादशाहत कायम रही। ये बादशाहत 1973 तक चली। 1973 में तख्तापलट हुआ और दाऊद खान अफगानिस्तान के पहले राष्ट्रपति बने। 5 साल बाद यानी कि 1978 में एक और तख्तापलट हुआ जिसमें सोवियत संघ का हाथ था। इस तख्तापलट को अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट क्रांति की संज्ञा दी गई। अफगानिस्तान की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान के नेतृत्व में एक नई सरकार का गठन हुआ। उधर कम्युनिस्ट्स के घोर विरोधी अमेरिका को यह तख्ता पलट रास नहीं आया और उसने उसी पल से इस वामपंथी कलेवर वाली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए योजना बनाना शुरू कर दिया। उस समय जिमी कार्टर अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने ही अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को मुजाहिदीन के पास भेजा। बाद में कार्टर ने इन लड़ाकों को हथियार और पैसे दिए। कार्टर के जाने के बाद अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बने रोनाल्ड रीगन। उन्होंने मुजाहिदीन को दिए जाने वाले फंड और हथियार दोनों में बढ़ोतरी कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर रहे इकबाल हसन की एक रिपोर्ट के मुताबिक रीगन ने साल 1983 में इन मुजाहिदीन को व्हाइट हाउस बुलाया और उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों की संज्ञा दी। रीगन यही नहीं रुके, उन्होंने इन कट्टर इस्लामिक विचारधारा वाले लड़ाकों को नैतिक तौर पर अमेरिका के संस्थापक और महान नेताओं जॉर्ज वॉशिंगटन और थॉमस जेफरसन जैसा बता दिया। अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1982 में रीगन ने अमेरिकी स्पेस शटल कोलंबिया को अफगानिस्तान के सोवियत विरोधी विद्रोहियों को समर्पित किया था। बाद में इन मुजाहिदीन और अमेरिका के बीच अंतर्विरोध बढ़ते गए। इसके परिणाम में अमेरिका के ऊपर 9/11 आतंकी हमला हुआ। फिलहाल तालिबान अफगानिस्तान में वापस आ गया है। ताज़ा अपडेट ये है कि उसकी वापसी के डर से काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग बस किसी तरह अफगानिस्तान से भाग जाना चाहते हैं। इस बीच एयरपोर्ट पर गोलीबारी और भगदड़ में कम से कम 5 लोगों की जान भी जा चुकी है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी मुरारी ने। शुक्रिया। अमेरिका की देन है भाई, ये तो क्लियर हो गया। वो लाइन क्या थी? वो लाइन एक मिनट, हाँ, हम खुदा में उनके गहरे विश्वास के बारे में जानते हैं। हमें विश्वास है कि उनके संघर्ष को सफलता मिलेगी।
उस तरह जो ज़मीन तुम्हारी है एक दिन वो तुम्हें वापस मिलेगी, तुम्हारी जीत होगी, तुम्हारे घर तुम्हारी मस्जिदें तुम्हें फिर से वापस मिलेंगी, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई सच्ची है और खुदा तुम्हारी तरफ है। ये लाइन तो क्रांतिकारी लोग अगर कोई को बोली जाएगी तो क्या करेंगे। और फिर वो उनके जो दूसरे राष्ट्रपति बाद में बने थे, वो क्या नाम था उनका, नाम मुझे याद नहीं रहा, उन्होंने तो उनको जॉर्ज वॉशिंगटन के बराबर बिठाल दिया। मतलब जिस तरीके की वो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने, अमेरिका ने ही उसको क्रिएट किया और आज उसकी खामियाजा पूरा अफगानिस्तान उठा रहा है। कुछ भी हो, कोई भी पॉलिटिकल बात हो या कोई भी पॉलिटिकल जब झगड़े क्रिएट होते हैं तो उसमें एक बात तो है, गरीब आदमी और आम आदमी ही मरता है। तो ये तो बड़ा फंडा क्लियर हो गया कि आज हम जिसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, एक्चुअल में उसे अमेरिका ने बनाया अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, और आज पूरा अफगानिस्तान, पूरी दुनिया उससे जूझ रही है। क्या होगा इस दुनिया का। सोच के भी डर लगने लगता है ना। तो ये था आज का वीडियो। होप आपको भी समझ में आ गया होगा। मुझे तो समझ में आ गया कि तालिबान जो है उसको अमेरिका ने बनाया। तो अगर तालिबान टेररिस्ट है तो अमेरिका भी कम नहीं है भाई, वो भी उसके बराबर ही बैठता है। और जो अमेरिका को सपोर्ट करते हैं मेरे ख्याल से वो भी सब टेररिस्ट ही हुए फिर तो ये है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ गई हो, तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं और दुआ करें अफ़गानिस्तान के लिए कि वहाँ सब ठीक हो जाए। जैसा जैसा अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन लोगों ने, तो उसमें जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि सबको हमने माफ़ी दे दी, सबके लिए एमनेस्टी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ दुआ करें अच्छी अपडेट आए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।